Good morning, everyone. Good morning, sir. प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया था. ओके, बताया था मैंने. आज शायद टाइप्स डिस्कस करने थे, करेक्ट? यस सर. सो एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, कल के सेशन से किसी को पूछना है? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So yesterday we have completed the OSI model and we have discussed the few points. कल हम लोगों ने OSI मॉडल कवर अप किया था और कल हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था प्रोटोकॉल का. So before going on the day 5, that is day 5 open, any कुछ भी पूछना है? No? No, sir. Very well, guys. So today जो प्रोटोकॉल है वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है और उसके कुछ टाइप्स. सो द टाइप्स दैट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर इज द very mostly used types that are being used over here. Although we are having the numbers of protocol that we can discuss over all those protocols for a weeks, for a 15 to 16 days continuous. हमारे पास इतने ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं इस पूरे टर्म के ऊपर कि आप पूरे 1 वीक, पूरे 15 डेज के लिए उसके ऊपर कंटिन्यू डिस्कस कर सकते हैं. दैट इज राइट. ओके, सो ओवर हियर वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट मच डीप. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रोटोकॉल दैट आर यूज्ड वाइडली इन नाउअडेज. हम लोग उन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे टर्म में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और बहुत ही ज्यादा टर्म यूज होते हैं. मतलब हम लोग उसको अपने डेली पर्पस में उसको यूज. ठीक है. And every term is we are studying the N plus. So N plus includes some set of the protocol related to the router, related to the switch, related to the networking, related to the communication. ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो राउटर से रिलेटेड होते हैं, जो स्विच से रिलेटेड होते हैं, जो नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं, जो हम अपने टर्म को यूज करते हैं. सो प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल. ये है क्या HTTP टेक्स्ट ट्रांसफर. So these are the set of protocols that we are having that we need to discuss. ये कुछ set of the protocols है जो हमारे पास है जिनको हम यहाँ पे discuss करें. Sir, sir, yes. Sir, protocol का definition थोड़ा show कर सकते हैं? कल मेरा वो मिस हुआ था.
Done. हेलो सर। अजय कौशिक, हाँ सर, वो एप्लीकेशन फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा ओ देंगे, एस आई थोड़ा सा मॉडल। वेट कर लीजिए। जी सर। बिल्कुल दिखा देंगे। हम ये शीट ही शेयर करते हैं, ठीक है? I'll be sharing this sheet only. Don't worry. ओके। Okay. Now over here, we are having the types of protocol. We are having the types of protocol. The first protocol says HTTP, Hypertext Transfer Protocol. What does it mean? The meaning says Hypertext Transfer Protocol. It means for transferring you from one place to the targeted location. Means when you are clicking on the YouTube, when you are clicking on the YouTube video, you are redirecting to the YouTube player. When you are clicking on the link, you are redirecting to the some of the source that where you are targeted to. But who is responsible for taking you from one place to another? It is just responsible for transferring, not for carrying any set of the data. HTTP कोई भी डेटा को कैरी ओवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ आपको एक जगह से दूसरे जगह कौन जो टारगेटेड लोकेशन है उस जगह पे लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट लाइक दैट, अगर हम क्लिक कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो हम कहाँ पे जाएंगे? उसके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे। विल गो फॉर द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज इफ यू आर क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग मी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट? That is the HTTP protocol responsible behind that, and it is widely used over here, like where you go for the YouTube, whether you click over the text, whether you click over the image, whether you like the things, everywhere. आप किसी चीज को लाइक करो, किसी भी चीज को आप शेयर करो, किसी भी चीज को आप कहीं पे भी क्लिक करके कहीं और जब आप पहुंचते हो तो that is what the responsible of HTTP. The transfer protocol means taking you from one place to another. Now, what is the meaning of hypertext over here? यहाँ पे hypertext का मतलब क्या है? The text which contains some kind of the targeted location inside them. मतलब उन तरीके के टेक्स्ट जो अपने अंदर एक टारगेटेड लोकेशन को स्टोर करके रखे हैं, उन टेक्स्ट को बोलते हैं हम हाइपरटेक्स्ट। इफ आई गिव एन एग्जांपल, यू ऑल हैव डन द गूगल सर्च। आप लोग सबने गूगल सर्च किया होगा एंड यू ऑल हैव सीन देयर इज two formats where the Google search represents. One in the blue color, underline format, bold letters. Rest are in the normal, whether it can be black, whether it can be white, depending upon the contrast. So that blue colored text is known as a hypertext, means you can click that thing and you are redirecting to the some other locations. So now that text can be image as well, that text can be video as well, that text can be your button as well. अब वो टेक्स्ट जो है कोई बटन हो सकता है, कोई आपका वीडियो हो सकता है, कोई आपका इमेज हो सकता है, कोई आपका प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जहां पे हम क्लिक करके कहीं और पहुंच जाए, इवन दो इफ यू आर क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट बटन, सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग द नेक्स्ट बटन? दैट इज द HTTP. कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके नेक्स्ट बटन को भी फंक्शन कराने के लिए? तो दैट इज द HTTP. whether you go for the applications that you are using in your phones, whether you go for the websites, आप अपने एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं अपने फोन में वो हो या फिर आप वेबसाइट्स के ऊपर कुछ भी यूज कर रहे हैं, हर किसी के पीछे HTTP रिस्पॉन्सिबल. Now there is another format of the HTTPS. The same function that we have discussed in the HTTP is the same thing that HTTPS perform. Just the difference is HTTP is unsecure and HTTPS is secure. Secure with the help of SSL certificate. Secure with the help of SSL certificate. It stands for Secure Socket Layer. SSL stands for Secure Socket Layer. Then what is this? What is this? This is the kind of certificate. It is a kind of certificate which is like proprietary owned by the Microsoft of this SSL, and it contains the algorithm. It contains the algorithm. Algorithm for what? Algorithm for securing your every layer, securing your website content, securing your website data, securing your all the transactions that you are doing. मतलब ये जो SSL है ये क्या है? SSL आपका एक सर्टिफिकेट है जो अपने अंदर एक एल्गोरिथम को स्टोर करता है, और जो एल्गोरिथम स्टोर करता है वो क्या करता है? वो आपके वेबसाइट के डेटा, वेबसाइट के कंटेंट, आपका जो डेटा रखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, उस चीज को आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, वो सारी चीजों को सिक्योर तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं. Now, you are going from one place to another place in the unsecured way.
whether I give you the full security, like you can go from one place to another in the full secure way, so you will feel yourself more secure, you will make the things in a more proper. अगर वहीं पे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, जहाँ पे आप एकदम मतलब कुछ भी हो सकता है, एंड जब हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक ऐसी चीज के साथ चलो जहाँ पे आपके पास पूरी सिक्योरिटी हो, यू आर हैविंग ऑल द बॉडीगार्ड्स विद योरसेल्फ, तो आप क्या करोगे, वहां पे काफी कॉन्फिडेंटली मूव करोगे. दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज द मीनिंग ऑफ STTs. एंड द SSL सर्टिफिकेट कैन बी परचेज फ्रॉम एनीवेयर. ये कहीं से भी परचेज किया जा सकता है. It can be like you can go with your domain hosting providers as well. It costs you like 60 to 10,000 rupees. 60 rupees से लेकर 10,000 rupees तक के आपके SSL certificates आते हैं. The reason it says कि we are having all the layers named as a OSI model में हर एक layer है, तो on each and every layer we go for the dedicated security, or we go for the combined security, or we go for the layers of the security and the versions of the security. जब हम SSL certificate purchase करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल वर्जन होते हैं, मल्टीपल टर्म्स होते हैं कि आपको हर एक लेयर का अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए, सारे को एक जगह पे कंबाइन करना है, आपको किस वर्जन पे चाहिए, किस लेवल का सिक्योरिटी चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड. इवन दो lots of the company depends their own SSL certificate by writing their own program. You can also develop your own SSL certificate if you know तो कुछ how काम to नहीं write करता the भाई. encryption program. आप भी अपना खुद का SSL सर्टिफिकेट डेवलप कर सकते हैं अगर आपको खुद का encryption program आता है. That is now the next is FTP. Next one is FTP. Very simple. FTP is very simple. It stands for File Transfer Protocol. FTP क्या है? File Transfer Protocol. Now over here the FTP is responsible for handling all the file transactions that you perform in the offline state, in the online state means over the internet or over your device. मतलब FTP क्या रिस्पॉन्सिबल है? FTP उन सारे फाइल ट्रांजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आप इंटरनेट पे करते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप या कोई भी डिवाइस पे करते हैं. इवन इफ आई सेव दिस शीट, अगर हम इस शीट को सेव कर रहे हैं, who is responsible for altering this sheet? FTP. If I am uploading the content, I am downloading the content, who is responsible for making all the things possible? Who is making the things to store in my data, store in my device? कौन responsible है चीजों को store करने के लिए? कौन responsible है मेरी चीजों को मेरे पास तक रखने के लिए? Just a second, guys. Yes, who is responsible for? Okay, over here. So this is the thing. Hypertext transfer protocol we are discussing about. So यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे FTP के बारे में. तो FTP is responsible for सारे file transaction को. But even though if I upload the content, even though if I download the content, if तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें हैपन होती है. जो भी आप फाइल्स को कहीं से भी आप डाउनलोड करें, यू आर डाउनलोडिंग द फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर प्लेटफॉर्म एट एनी टाइम, यू आर अपलोडिंग द थिंग्स, यू आर डाउनलोडिंग द थिंग्स. सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Okay. This is everything related to the file, where you are storing, where you are downloading, where you are uploading, where you are altering, where you are creating, where you are updating, सारी चीजें. Now, the second thing is SMTP. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. SMTP किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? Simple Mail Transfer Protocol के लिए. Now, over here, the Simple Mail Transfer. Yes, Harsh.
सर एफटीपी से फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमको RJ45 की जरूरत होती है, इंटरनेट की जरूरत होती है। RJ45 क्या है हर्ष? वो जो आपने सिखाया था सर, RJ11, RJ40। RJ45 को मैंने बताया अभी तक क्या है, सिखाया और बताया भी क्या है अभी तक? सर लैन केबल। लैन केबल का क्यों यूज होता है? इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए। और यहाँ पे हमें एफटीपी क्या है? हाँ जी, नेटवर्क ही होता है शायद सर। क्या एफटीपी नेटवर्क है? अच्छा, प्रोटोकॉल का मतलब बता दीजिए। हेलो। हाँ जी हर्ष। हेलो। हाँ जी हर्ष, बताएं। सर वही मुझे पूछना था, एफटीपी से फाइल ट्रांसफर करने के लिए मतलब किस चीज की नेटवर्क की जरूरत होती है, या मतलब लैंड नेटवर्क भी रहता है ना, उसकी जरूरत होती है, या हम कहाँ से भी मतलब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एफटीपी का? नहीं, हम आपको बता रहे हैं। क्या आपका नेटवर्क अलग है? क्या आपका RJ45 अलग है? क्या आपका लैन नेटवर्क अलग है? क्या ये तीनों चीजें अलग अलग है? कैसे? आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि तीनों चीजें अलग अलग? बताइए। अलग नहीं सर, बट मुझे मतलब ये डाउट था कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। हम वही चीज आपको बता रहे हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं हम कैसे सॉल्व होगा? हम बता रहे हैं, आप पहले ये तो बताइए कि तीनों चीज अलग अलग है। तीनों भी केबल ही है सर, मतलब लैंड केबल ही है। किस चीज के लिए यूज होता है? कौन सा सर? कोई भी केबल, हम किसी भी रैंडम RJ45 ले लें, हम कोएक्सियल ले लें, हम ऑप्टिकल फाइबर केबल ले लें, कोई भी केबल है, एक नहीं केबल आईपी नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, मतलब नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए। हाँ, उस नेटवर्क के ऊपर हम इंटरनेट भी ट्रैवल करा सकते हैं। हाँ बराबर बराबर, ठीक है, ये तो समझ में है। तो अगर हम बात करें कि आपके कोई रिलेटिव है, यू आर हैविंग योर ओन रिलेटिव हु इज जस्ट लिविंग ऑन 20 किलोमीटर्स, कोई है जो आपके 20 किलोमीटर्स के टर्म पे रह रहे हैं और वो काफी दूर के हैं, ठीक है? कैन यू गो फ्रिक्वेंटली ओवर देयर? क्या आप वहां पे फ्रिक्वेंटली जा सकते हैं? यस सर। अच्छा, आप जा सकते हैं, ठीक है। आप फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं, तो क्या आप वहां पे जाने का, क्या आप वहां पे कैसे भी जा सकते हैं, या एक प्रोटोकॉल होगा या एक तरीका होगा वहां पे जाने का? प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ लेके जाना होगा, करेक्ट? We can't go empty handed. We have to buy some sweets. We have to buy something. Correct? बराबर। उसी तरीके से हमारा एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करा रहा है और एक बता रहा है कि उस कनेक्शन पे अगर हमको कोई ऑपरेशन करना है तो उस चीज के लिए हम क्या चीज परफॉर्म कर सकते हैं, उस चीज के लिए हम क्या सिलेक्ट करें। समझ में आ गया? Clear? Now, the thing says over here कि if you all guys are thinking कि you have to select by sit on the computer and you have to select, okay, I need to do the file transfer, I have to click on FTP. If you are thinking in such a way, then you are wrong. You don't have to perform in this operation. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी चीज अगर आपको करना है तो आपको कंप्यूटर पे जाके सर्च करना पड़ेगा या वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें HTTP करना है, यहाँ पे हमको FTP करना है, तो आप गलत है। Why? Because I just said कि you are not the first guy who is going to use all these things. You are not the first guy who is developing the internet. आप कोई पहले इंसान नहीं है जो इंटरनेट को डेवलप कर रहे हैं। हम लोग कोई पहले इंसान नहीं है जो हम लोग इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। All the things are predefined.
all the things are installed in your system, it just get activated according to the use. ये automatic backend में activate होता है जहां भी हमें यूज करना पड़ता है, जहां पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, where we do the programming, we program कि which protocol you have to use on that level, not on this level, not on the user levels, on the development level. जब हम डेवलपमेंट लेवल पे जाते हैं तब हम वहां पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं कि हमें कौन से प्रोसेस किस प्रोटोकॉल पे करानी है। लेकिन यहाँ पे एज अ यूजर हम सिर्फ उस चीज को यूज करते हैं, और जब हम यूज करते हैं तो हमें उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि ये किस वजह से काम करता है। क्लियर? सर ये जैसे सर सर ये जैसे फाइल ट्रांसफ़र करते हैं हम लैपटॉप या उसमें, तो एफटीपी का यूज़ होता है लैपटॉप में, जैसे फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, क्या सर नेटवर्क में यूज़ होता है, नेटवर्क में? मैंने क्या बोला कि आप किसी भी सेगमेंट पे आप फाइल को ट्रांसफर कीजिए, जी फाइल को ट्रांसफर कीजिए, रिसीव कीजिए, अपने लैपटॉप से अपने डेटा फोन में आप डेटा को ट्रांसफर कीजिए, आप इमेज को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, ऑल्टर कीजिए, हर जगह पे आपका एफटीपी रिस्पॉन्सिबल है। जी सर, जी सर। फाइल के साथ कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, फाइल के साथ आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपका जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोटोकॉल वो एफटीपी होगा। और सर एसएमटीपी में मेल का, जैसे मेल करना है अपने को, तो ये यूज़ होगा वाला प्रोटोकॉल? अभी हम एसएमटीपी बात नहीं कर रहे हैं, जी अभी जी सर, जो चीज चल रहा है उसके ऊपर स्टिक रहिए, पहले एक चीज को कवर अप कीजिए फिर दूसरी चीज पे जाइए। जी सर, जी। ठीक है, ओके सर। पार्ट बाय पार्ट चलिए, अगर सारी चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो कंफ्यूजन ओके डेफिनेटली जनरेट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, करेक्ट? एसएमटीपी। So over here, when we are talking about the SMTP protocol, then what is it responsible for? All the mailing sections. Whatever the mail you receive, whatever the mail you turn, whatever the mail you send. जो भी मेल आप सेंड करते हैं, जो भी मेल आप रिसीव करते हैं, उन सब के पीछे SMTP रिस्पॉन्सिबल होता है। ना to use this SMTP protocol, you don't need to implement or configure any set of the server. इस SMTP प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए आपको कोई भी मेलिंग सर्वर या मेलिंग सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। इट इज वाइडली यूज्ड बाय @gmail.com। ये ज्यादातर आपका @gmail.com से यूज हो रहा है। इफ यू गो टू @mustdeep, इट इज आल्सो बीइंग यूज्ड बाय द facebook.com। ये ज्यादातर facebook.com से भी यूज हो रहा है। द रीजन इज over here you don't receive any set of the notification if you are using the SMTP protocol। अगर आपके पास SMTP प्रोटोकॉल हो रहे हैं, अगर आप SMTP प्रोटोकॉल पे आप यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी मेल रिसीव करेंगे उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बट the most of the people will think कि सर I receive the mail frequently over the Gmail and I receive the notification। हम लोग अपने Gmail के ऊपर मेल रिसीव करते हैं लेकिन वहां पे नोटिफिकेशन आता है। So mark the things कि are you receiving the mail from @gmail.com or @any business name। आप वहां पे ध्यान देंगे कि जो भी मेल आप रिसीव कर रहे हैं तो वो मेल आपको सेंड कौन कर रहा है, उसका सेंड जो हो रहा है वो @gmail.com से आ रहा है या फिर @business name से आ रहा है। अगर @gmail.com से होगा तो you are not going to receive the notification। If still you are receiving the notification, so there is a one application function called as push notification। यहाँ पे क्या होता है कि SMTP का है कि जो भी SMTP यूज हो रहे हैं, अगर आप Gmail से Gmail पे मेल करेंगे आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा। You are not going to get any set of the notification if you are doing the Gmail to Gmail, not possible, not at all। Now the thing is कि if you are still receiving the notification, then have a check it is from the Gmail or @business। Third point, there is a one function called as push notification inside the application that we install and it gives us the notification to the users on every task। वो जो push notification का एक फंक्शन होता है, हम जब भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वहां पे, तो वहां पे क्या टर्म होता है कि वो जो भी टास्क होगा, जो भी चीज कवर अप होंगी, उसका एक नोटिफिकेशन आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट वर्क्स इन अ वेरी स्मॉल वे। ये जो जीमेल पे है ये काफी छोटे टर्म पे काम करता है। So if you want to have a test, you can have a test @gmail। You will receive no any kind of term over here। If the mail is lost, means it lost। SMTP में क्या है कि एक बार अगर मेल डिलीट हो गया तो वो डिलीट हो गया। It is a kind of the protocol which says कि we install the one mailbox outside our house। हम लोग क्या करते हैं, एक मेल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं अपने घर के बाहर।
तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी any courier comes so he can drop it over there and he can go. If someone has taken out, it means lost. क्या होता है कि हम लोग घर के बाहर अपना एक मेल बॉक्स ला के रखते हैं कि अगर कोई भी कुरियर आए तो वो सिंपल उस मेल बॉक्स में रखते हैं और वो चला जाए बिना डिस्टर्बेंस के। अगर गलती से कोई उसमें से कोई भी मेल बॉक्स निकाल लेता है, कोई भी कुरियर अगर उसमें से ड्रॉप हो जाता है, तो इट्स लॉस्ट, इट विल लॉस्ट, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ दिस। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। नाउ सेम थिंग हैपन विद द पोस्ट। सेम थिंग आपका पीओपी के साथ होता है, पोस्ट ऑफिस। यस Sir, but if we want to send any file over the mail, then sir, which protocol will we use? SMTP plus FTP. Both. Hmm. Okay. 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 There is one more thing, guys. In most of the cases, we don't use only one protocol for one function. No. If we are over here in the Zoom, अगर अभी हम लोग इस Zoom call पे हैं, तो in the backend there are the multiple sets of the protocol that are involved in making us connected and making my voice to reach you clear without any kind of interruption. क्या है कि अभी हम Zoom कॉल पे अभी सबके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैकएंड में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व होंगे जो मेरे वॉइस को आप तक पहुंचने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे और हमें यहाँ पे कनेक्टेड रखने में हेल्प कर रहे होंगे डाटा के साथ। ओके, सो we never use the one protocol for one task like okay, not at all. We use the multiple sets of protocol everywhere. अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उस टास्क को अकॉम्प्लिश करने में बहुत सारे प्रोटोकॉल इन्वॉल्व। There are the multiple sets of protocol involved in performing the one single task. For sure. So POP. POP stands for Post Office Protocol. It is also a mailing protocol. ये भी एक mailing protocol है. But to use this POP, you have to configure the mailing system or a mailing server. POP को use करने के लिए आपको एक mailing server या mailing protocol, mailing system की जरूरत पड़ेगी. Over here, you receive every notification whether you send or receive the message. आपके पास यहाँ पे हर एक चीज का नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। This is the thing. You are having the multiple stages of backup over here. यहाँ पे multiple stages of the backup होता है। You are having the backup over the mailing server. You are having the backup over the client side. You are having the backup over the same backup server. आपके पास यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस में बैकअप है, एक मेलिंग सर्वर के ऊपर बैकअप है, एक बैकअप सर्वर के ऊपर, एक क्लाइंट साइड के ऊपर बैकअप है। सो देयर इज नो एनी चांस यू कैन लॉस एनी काइंड ऑफ मेल। ऐसा कोई चांस नहीं कि आप एक कोई भी मेल को लॉस कर सकते हैं। So this is it. Every time you will receive the notification, so it acts in something like this. ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपके पास कोई भी कुरियर आता है, you receive any kind of the courier, so you get a call, correct? Yes sir, you receive this kind of the courier where you want to get delivered. Means this complete set of functions happen over here. ये जो पूरा set of function है वो यहाँ पे काम करता है where we say POP stands for Post Office Protocol. Clear guys? Very well. So now we are having TCP. TCP stands for Transmission Control Protocol. What is it responsible? It is responsible for taking your data from one place to another place. आपके डेटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल कराने के लिए. It is responsible for making your data to travel over the internet. Who is responsible? TCP. Now the TCP says, see, I will acknowledge the user. I will handshake with the user. Means the user means the receiver. Okay, I will handshake the receiver. I will acknowledge the receiver. Then I will travel the data, and the data will travel by using the TCP protocol. Will be in the sequence format, and it makes sure that there should not be any set of loss over the data, and it receives in the complete 100%, means ensures the complete data reliability. TCP protocol क्या है? TCP protocol आपका एक प्रोटोकॉल, आपका एक टर्म है जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ओवर द नेटवर्क। ये क्या कहता है कि हम पहले रिसीवर इनको एक्नॉलेज करेंगे, फिर उसके साथ हम हैंडशेक करेंगे, फिर हम डेटा को ट्रैवल कराएंगे, और जो डेटा ट्रैवल होगा वो सीक्वेंस वे में ट्रैवल होगा। जब वो सीक्वेंस वे में ट्रैवल करेगा तो वो वहां पे वो इंश्योर करेगा कि कोई भी डेटा लॉस ना हो,
वहां पे आपको 100% डेटा रिलायबिलिटी मिले और जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो आपके एंड तक रिसीव। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीसीपी। सेम यूडीपी। यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नाउ व्हाट द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल सेज? यहाँ पे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या कहता है? What does it say? It is also responsible for taking the data over the network. ये भी रिस्पॉन्सिबल है आपके डेटा को नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल कराने के लिए, बट इट सेज कि आई विल नॉट एक्नॉलेज द यूजर, आई विल नॉट हैंडशेक विद द यूजर। हम यूजर को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम यूजर के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। व्हाटएवर द डेटा इज गोइंग टू ट्रैवल ओवर हियर इज गोइंग टू ट्रैवल इन द zigzag फॉर्मेट। जो भी डेटा ट्रैवल करेगा वो zigzag फॉर्मेट में ट्रैवल करेगा एंड इट नेवर गिव्स यू द डेटा रिलायबिलिटी। ये आपको डेटा रिलायबिलिटी नहीं देता है। सेकेंड थिंग, इट इज अनसिक्योर बट अ फास्ट प्रोटोकॉल। एंड ये जो है एक अनसिक्योर और फास्ट प्रोटोकॉल है और ये किसी भी चीज का ख्याल नहीं करता है। द थिंग इज इट नेवर टेक्स व्हाट द डेटा इज बीइंग रिसीव्ड, व्हाट डेटा इज लॉस्ट। कितना डेटा रिसीव हुआ, कितना डेटा लॉस्ट हुआ, दैट डजंट। बट ओवर द टीसीपी इट इज अ कंसर्न। तो टीसीपी इज नोन एज अ स्लो बट अ सिक्योर प्रोटोकॉल, यूडीपी known as unsecure but fast protocol. Here's the thing. And the IP is responsible for making the internet connections be accessed by the user. ये क्या हेल्प करता है कि आपका जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो यूजर के टर्म पे एक्सेस होगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द आईपी इन द डिटेल वे ओवर हियर। बस फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी एनी क्वेरी एचटीटीपी टू यूडीपी। एचटीटीपी से यूडीपी में किसी को कुछ पूछना है? सर ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बस मैसेज देने के लिए, कुछ नोटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है ना सर? मेलिंग के लिए? बस मेलिंग के लिए, नोटिफिकेशन का कि मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हेलो, नोटिफिकेशन के लिए अलग होता है। हम क्या कह रहे हैं, एसएमटीपी में आपका नोटिफिकेशन नहीं होता, लेकिन पीओपी में आपके पास हर चीज का नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आ रहा है तो मेल भी रिसीव होगा। ओके सर। नो क्वेरी? नो सर। So we are having the term called as IP. This is the thing that we have. Internet protocol. What is internet protocol? IP. तो IP allow us to access the internet. IP क्या करता है? हमें internet access करने के लिए allow. How? So when we are accessing the internet, it gives us one IP address. ये एक IP address हमें देता है जब भी हम internet access करते हैं, और उसी IP address के टर्म पे हम पूरे internet के resources को use करते हैं. We use all the resources over that IP address over the internet. Let's understand this thing in a different way. इस चीज को थोड़े इस तरीके से समझते हैं. We are having one society. हमारे पास एक सोसाइटी है where we are having lots of the entities. हमारे पास बहुत सारे resources हैं उस सोसाइटी में. That those resources are only accessible by them. Those who are the residents
if you are willing to use that resources, if you are willing to use that resources, if you are willing to use that all the amenities, then what you have to be, what you have to perform. First of all, you have to be the resident of that society. अगर आपको उसके resources को use करना है, अगर आपको उसके term को use करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके resident होना पड़ेगा. Next thing, when you are the resident of that particular society, when you are the resident of that particular society, then how you get recognized? आप कैसे recognized होते हैं उस society के अंदर? By your name, क्योंकि आर्यन श्रीवास्तव. आर्यन श्रीवास्तव might be there is a 10 people in the same building with the name. Might be, that can be possible. Over my designation. So suppose I am a cloud solution architect, AWS solution architect, suppose. Then, so over my designation related to my job, I am having the multiple sets of people. मेरे जॉब से रिलेटेड, मेरे टर्म से रिलेटेड हमारे पास 1000 लोग होंगे या 10 से 15 लोग हो सकते हैं. There can be the 10 to 50 people who are completely over the AWS solution architect, and they might be belong to the different organizations. I can't get, but how will we get recognized? With my flat number. Over this building, if I say in the tower P or in the tower L, I am having 1805, I am having 1806, I am having 1809, I am having 1208, I am having 1205. So these flat numbers are owned by me only. ये जो flat numbers हैं, ये किसके थ्रू ओन हो रहे हैं? सिर्फ मेरा, सिर्फ हम ओन कर. If I say कि I am having the 1808, मेरा 1808 है. Okay. So in that will, what will happen? यहाँ पे क्या होगा? कि I'll be recognized at 1808 over here in that particular building. No one else can own the same flat number. उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई और उस नंबर को ओन नहीं कर सकता है. That is what the IP says. And every time when I used to use the resources, it will be said कि 1808 people has used this kind of the resources. 1808 ये person ने इस resource को add किया. That is the thing. That is what the IP says. So if I want to use the resources, then I need the IP address. अगर हमको resources को use करना है, तो हमारे पास IP address होना चाहिए. और IP address कौन provide कराता है? Internet protocol. और Internet protocol कहाँ से provide करेगा? तो वो DHCP से contact करेगा या फिर we are having the sets that we are going to look for. This is what the IP says. So IP only allow us to access the internet, through which it provides us one yes. Internet protocol हमें internet access करने के लिए provide कराता है, जिसके through हमें एक IP एड्रेस मिलता है, जिसके बेसिस पे हम पूरे इंटरनेट रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. समझ में आया? Yes, sir. Any queries? Any queries? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Quite well. So internet protocol only this much. Rest description carried over on the IP address. Internet protocol इतना ही है. बाकी जो इसके सम होते हैं, बाकी जो इसके टर्म डिफाइन होते हैं, वो IP address के ऊपर डिफाइन होते हैं. तो tell me how many types of IP addresses we have? Anyone? Yeah. 4 types, sir. बताइए. Private, public, dynamic, static. Private, public, Dynamic, static. dynamic, static. Anyone else? और कोई है जो अपना आंसर देना चाहते हैं? These are very well. So there are only
IP is always unique under the intranet. Public IP this IP is always unique over the internet. That is always paid. There are two types of IP allocation technique. यहाँ पे दो तरीके का IP allocation technique है. We are having a dynamic. It provides IP via DHCP, stands for Dynamic Host Configuration Protocol. We are having a static. We set IP manually. We set IP manually. This is it. So there is nothing as such. You are having the things that called as dynamic having the different ranges and static having the different ranges. No, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि static का अलग range है, dynamic का अलग range, not at all. The static can be in the between range of the public and private, dynamic as well. जो static है वो private और public के range के बीच का होता है और जो dynamic है वो भी उनकी दोनों के range के बीच का होगा. That is the thing. Now the main thing is कि we are having the two types of IP addresses that says the public and private. जो क्या कहता है public और private. Private always unique under the intranet. Private जो है इंटरनेट होता है और जो पब्लिक है वो हमेशा यूनिक होगा आपके इंटरनेट के ऊपर. एंड टू यूज दिस पब्लिक आईपी यू हैव टू परचेस दिस. और आपको पब्लिक आईपी यूज करने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा. एंड यू ऑल नो द थिंग्स ओवर द इंटरनेट एंड इंटरनेट. इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. Okay, now there are the two types of IP allocation technique. Means how my device will allocate the IP, how I am going to get the IP over my system to access the internet. मतलब मेरे सिस्टम के ऊपर कैसे IP allocate होगा कि हम इंटरनेट को एक्सेस कर सके. और जो IP allocate होगा या तो वो पब्लिक होगा या तो वो प्राइवेट होगा. If IP is allocated to my system, then it can be public or it can be private. There is nothing as such we are going to be the static or dynamic. The meaning of the static and dynamic is that a static says fixed IP. Static का मतलब क्या हो गया? Fixed IP. As many time you connect with the internet, as many time you disconnect with the internet. If I have set the IP manually, it is not going to change at any cost. जो static IP हुआ, वो fixed IP हुआ, जिसको अगर हमने set कर दिया और जितने बार आप on करेंगे, off करेंगे, जितने बार आप इंटरनेट के साथ connect हो, disconnect हो, आपका IP change नहीं होगा. At any cost. आपका IP change नहीं होने वाला है किसी भी cost के ऊपर. Second thing, if I am using the dynamic IP that called as DHCP, so DHCP is responsible for providing us the IP. DHCP responsible है हमें IP provide कराने के लिए. So dynamic IP says as many time you connect with the internet, as many time you disconnect with the internet, that is going to change the IP every time. अगर हम कितनी बार भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो, कितने बार भी इंटरनेट के साथ डिस्कनेक्ट हो, हर बार मेरा आईपी चेंज होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि वो DHCP के थ्रू है, वो डायनेमिक आईपी के थ्रू है. दैट इज इट. ओके. एंड इफ आई से necessary things to access the internet over a system, necessary things required to access the system, access internet over the system. What we having? First, I need IP address. Second, I need subnet mask. Third, I need gateway. And fourth, I need DNS, preferred and alternate. Preferred and alternate. These are the four things required. If you are
access the internet over the system. Necessary things for accessing internet at anywhere. कहीं पे भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इंटरनेट हो या इंट्रानेट हो या कुछ भी हो, आप इंटरनेट में कनेक्ट हो रहे हैं, you need these four things. You are connected into the network, you need these four things. Let me make the things more clear. हम चीजों को मेंशन भी करें. These are the things that required. These are the four things that required. And this four thing, if you are going for the static, you need to give the four things manually. If you are going on the dynamic, the DHCP provide all the four things. अगर आप स्टैटिक पे जा रहे हैं तो आपको मैनुअली बैठ के ये चारों चीजें एंटर करनी पड़ेगी, और अगर आप डायनेमिक पे जा रहे हैं जो DHCP प्रोवाइड करेगा तो वो DHCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चारों चीजें आपको प्रोवाइड करना. बी सिंपल. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये चीज पता कहाँ से चलेगा, where I will get the things. So IP addresses, subnet mask, gateway, DNS. If they say in the organization कि you need to provide the static one, अगर वो कहते हैं कि आपको static one provide कराना है तो बकायदा वो आपको sheet देंगे जहाँ पे सारी चीजें mention होगी. They will give you the sheet where the IP address will be mentioned, the subnet mask, gateway, DNS, preferred, alternate, everything will be mentioned in a detailed way कि in which system, which IP you have to configure and how you have to go. That is the thing. No worries at all. But tell me, understood till over here? सर Yes. सर डायनामिक या फिर स्टैटिक यूज करने से सर एक्चुअली डिफरेंस कुछ फर्क पड़ता है क्या? मतलब कुछ डिफरेंस तो होता नहीं है ना, मतलब बस स्टैटिक में हमें मैन्युअली ऐड करना है और डायनामिक में वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा. लेकिन वर्क बाकी तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है ना, बस आईपी चेंज होता है. तो आप पूछना क्या चाह रही हैं मतलब? वही कि मतलब कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं है ना, मतलब सेम ही है, बस वे डिफरेंस है. ओके. अगर हम बात करें, आप डिवीजन के थ्रू मेरे पास आए, ठीक है? ओके. You are coming from through division to me. You all are dynamic for me. आप मेरे लिए डायनेमिक. After this Saturday, you all are going to change. Saturday के बाद N plus मेरा चेंज हो जाएगा. Correct? यस सर. Now, if you all come direct to me, अगर आप मेरे पास डायरेक्ट आते हैं, so it can be 1 week, it can be 2 weeks, it can be for a year, it can be for a month, not going to change. Understood now? यस सर. ओके सर. फर्क बस इतना सर. ओके. अंडरस्टूड सर. Very well. Is there any more queries? Very well, guys. So let's move ahead. So now it says keep paid. Paid. Before going on the paid thing or over the paid thing as well, who is handling all those segments? ये इन सारी चीजों को हैंडल कौन कर रहा है? Who is developing the IP? IP को डेवलप कौन कर रहा है? इस पूरे इंटरनेट रिसोर्सेज को मैनेज कौन कर रहा है? Who is managing all these resources? If I say the work of eVision is being managed by the eVision staffs, जो वर्क ऑफ eVision है वो eVision staffs के थ्रू मैनेज हो रहा है, डेडिकेटेड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने हैं, बट हु इज रिस्पांसिबल, हु इज द पर्सन बिहाइंड द सीन, हु इज हैंडलिंग ऑल द इंटरनेट? कौन पर्सन है जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है, जो पूरे इंटरनेट को हैंडल कर रहा है? हु? सो देयर इज अ वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज आई. यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आई, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर, और क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी. Okay, so this is the organization who is responsible for managing all the internet connectivity, all the protocol, all the domain, all the extensions, everything, everything over the internet. ऑर्गेनाइजेशन ये वो सारी चीजें आपका हैंडल करता है. कोई भी चीजें अगर आपका इंटरनेट पे चल रही है, प्रोटोकॉल, डोमेन, आईपीस, आईपी एड्रेसेस,
आपके डोमेन एक्सटेंशंस पूरे इंटरनेट रिसोर्सेज को ये हैंडल करता है, एवरी इंटरनेट रिसोर्सेज. एंड टू हैंडल all the things over the world in a smooth way, it divided himself into the 5 sections. अपने आप को स्मूथ फंक्शन करने के लिए और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर इंटरनेट को एक्सेसिबिलिटी बनाए रखने के लिए, चीजों को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इसने अपने आप को 5 टर्म में डिवाइड करके रखा. So let's have a look at that 5 things. These are the 5 things who is responsible for handling all the internet all over the world. This is the thing that we have. And we fall under the ethnic region. और हम लोग का जो इंडिया जो फॉल करता है वो ethnic region के अंदर फॉल करता है. And we all do the internet, all the ISPs that they are getting regulated, जो भी ISPs है जो रेगुलेट हो रहे हैं वो सारे ethnic region के अंदर रेगुलेट हो रहे हैं. This is the thing. Understood guys? अब हम लोग बात कर रहे हैं versions of IP. Versions of IP. So there are 2 versions. One is IPv4, stands for Internet Protocol version 4. Second one is IPv6, Internet Protocol version 6. This is what it says. ठीक है? And we are completely focused over the IPv4. और हम लोग completely focused है IPv4 के ऊपर. Why? ऐसा क्यों? Why we are focused on the IPv4 only? So we are focused on the IPv4. The reason is the IPv6 is the latest one, but it required lots of the advantages. IPv6 आपका लेटेस्ट है लेकिन वो बहुत सारी चीजों को रिक्वायर करता है. इसका बहुत सारा टर्म है. मतलब कहने का सेंस क्या है कि even though having the IPv6 or the latest one, when we transmit the data to it loses the data. It is only responsible for delivering the 95% of data over the user segment if you are having the updated device on every pattern where the data is being transmitted. यहाँ पे क्या कहता है कि IPv6 आपका लेटेस्ट होने के बावजूद अगर इसके ऊपर हम कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो 95% डेटा ही यूजर एंड के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है अपने डिलीवरेबल के लिए. इवन दो कि अगर आप पूरे ट्रांसमिशन में अपडेटेड डिवाइस भी यूज कर रहे हैं तब भी मतलब IPv6 आपका डेटा यूज करता है. एंड लॉट्स ऑफ द वेबसाइट्स आर रनिंग ऑन द IPv6 एज वेल. मींस बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो IPv6 को यूज कर रहे हैं. बट इफ दे आर यूजिंग द IPv6 they need to use the IPv4 as the default. Why? IPv4 provide the jack to IPv6. IPv4 जो लोग IPv6 यूज कर रहे हैं
उनको IPv4 बाय डिफॉल्ट यूज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि IPv4 IPv6 को जैक प्रोवाइड करा रहा है कि आप 100% डेटा डिलीवरेबल करें। So in the every device you will find, whether it is your phone, whether it is your laptop, whether it is anything, आप कहीं पे भी फाइंड आउट करेंगे तो आपको IPv6 और IPv4 दोनों मिलेगा। You will find the IPv4 and IPv6 both over here on the system. If I show you, here is my IPv6. You can see IPv6 and here is my IPv4. यहाँ पे IPv6 और IPv4 दोनों है। We all are using both the IPs for the content deliverable for the proper functioning. हम लोग यहाँ पे दोनों चीजों को यूज कर रहे हैं। Now, अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि inside the organization, तो inside the organization we are only responsible for using the one set of IP. Inside the organization में हम एक ही set of IP को यूज करते हैं, that is IPv4. Because easy to manage, easy to calculate, easy to allocate. Manage करना easy है, allocate करना easy है, उसके ऊपर calculations करना काफी easy. And mark my word, guys, mark my words. Even we come up with the complete IPv6. So the IPv6 is going to be available for the normal use just like me and you. IPv6 अगर पूरे तरीके से आ गया तब भी सिर्फ वो पब्लिक यूज के लिए होगा जो हम और आप लोग करेंगे. But inside the organization, when the communication is being made, where the communication is being generated, where the actual data is getting fetched, there will be the use of IPv4. जहाँ पे आपका एक्चुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअल डेटा को फेच किया जा रहा है, वहां पे IPv4 ही यूज होगा, ना कि IPv6, because IPv4 is reliable, IPv4 is very very reliable without any kind of the data loss. ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है बिना किसी डेटा लॉस. सो IPv4 इज नॉट गोइंग टू वैनिश. IPv4 आपका वैनिश नहीं होने वाला है किसी भी कॉस्ट के. क्लियर गाइस? ओके सर. ओके सर नहीं समझ में आया कि नहीं ये बताइए. यस सर, यस सर. क्यों होगा, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? करेक्ट? Now, let me quickly grab the difference between both of them, guys. Just a second. My screen was on pause. Just a second, guys. Here is your difference, guys. Please make the notes quickly. Done? Yes, sir. These are the things. Be good, guys. Done? Very well. So over here the difference is in a very simple language. Difference जो है आपका बहुत ही simple language है, just like a kid writes. जैसे कोई बच्चा लिखता है, अच्छा ये इधर हो रहा है तो इधर ये नहीं होगा. The thing is happening over here, the thing is not happening over here. So just kind of that difference कि even IPv4 is of 8 bits, so IPv6 is of 16 bits. So you can have the things over here. Very easy to understand, easy to talk. So I have just tried to make the things in a very easy way.
हम यहाँ पे बस एक कोशिश की है कि आपको ये सारी चीजें इजी टर्म पे हो, जिसे आप जल्दी से पढ़ के तुरंत समझ सके और इलैबोरेट भी कर सके, सो यू कैन हैव द डिफरेंस ऑन योर ओन. So now the thing is, we are focused on IB4. So let's discuss over IB4. So as we have seen that IPv4 consists of classes. IP4 आपके classes को consist करता है, correct? So over here, class A 0 to 127, class B 128 to 191, class C 192 to 223, class D 224 to 239, class E 240 to 253. ये classes है. Now the thing is कि why we come up with the classes, हमें classes की जरूरत क्यों पड़ी? The necessity of the classes is that we need to provide the IP to everyone. Classes का necessary इसलिए है कि फिर हमें IP हर किसी को provide कराना है, ना कि हमें IP कुछ इस तरीके से provide कराने की कोई specific terms. You know, we need to provide the IP to everyone. We want कि the internet should be used by everyone. हम चाहते हैं कि जो internet है वो हर कोई use कर सके. That is it. So that is why we divided them to the classes. इसलिए हमने यहाँ पे classes को divide. Now every class consists of their first set. हर एक क्लास अपने अपने एक सेट को डिफाइन करता है. If I talk about class C, अगर हम क्लास C का बात करें तो you are going to have the not entertainment, search, research and development. ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है? आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए. We are having class D. हमारे पास class D है. तो class D is being used for entertainment purpose. Class D आपके entertainment purpose के लिए यूज हो रहा है. Now entertainment purpose means all the news TV channels, everyone will be use class D. जो भी न्यूज चैनल्स है, टीवी चैनल्स है, जो भी है वो सारे क्लास डी को यूज करेंगे. जितने भी नासा, इसरो, डीआरडीओ, व्हाटएवर द रिसर्च सेंटर्स वी हैव, नासा, इसरो, डीआरडीओ, एवरीवन इज गोइंग टू यूज द क्लास डी. वो सारे क्लास डी आईपी को यूज करेंगे. द पब्लिक, द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अलाउड टू टच द क्लास डी. और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम लोग हैं, हम लोग को एकदम अलाउ नहीं है कि आप क्लास डी और ईआईपी को टच भी कर सकते. दैट इज इट. नाउ क्लास सी used for small organization. Class C small organization के लिए यूज होता है. Class B is used for medium organization. Class B medium organization के लिए यूज होता है. And we are having class A used for large organization. हमारे पास class A है जो आपके large organization के लिए यूज होता है. Large organization. ठीक है. You are right कि organization means the company, the organization. Yes, organization मतलब आपका वही organization है जो आप समझ हैं, just like the company Airtel, ISPs. So class A for large, class B for medium, class C for small. How we come up? We are not focused on the D और E. D और E हमारे use का नहीं है. We never use the D और E. हम लोग कभी भी D और E को use नहीं कर सकते. So all over the world they all are accessing the internet on the basis of class A, B और C.
और ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग क्लास ए बी और सी के ऊपर ही इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नाउ हाउ वी कम अप विद द टर्म कि क्लास ए फॉर लार्ज, क्लास बी फॉर मीडियम, क्लास सी फॉर स्मॉल? कैसे? क्या सिर्फ आंख बंद था और हमने बोला कि देखो यहाँ से यहाँ तक लार्ज, यहाँ से यहाँ तक मीडियम और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल? ऐसे नहीं। We divided them on the basis of number of users, number of hosts. यहाँ पे हमने इनको डिवाइड किया इनके नंबर ऑफ यूजर्स के ऊपर, इनके नंबर ऑफ होस्ट के ऊपर। मींस we divided them in a set of IP of a dedicated class, how many unique user can connect? मतलब एक क्लास के IP का एक जो सेट होता है, उस सेट में कितने यूजर को, कितने यूनिक यूजर को हम कनेक्ट करके इंटरनेट दे सकते हैं। सो number of host, or we can say that the user। तो अगर हम क्लास ए का बात करें तो 1,67,77,200 क्लास बी 65,542, क्लास सी 254। इस तरीके से आपका डिवीजन परफॉर्म होता है। लाइक दिस योर डिवीजन is, like this your division is performed, go like got performed, right? So class A में हम 1,67,77,240 numbers of users, unique users को करेक्ट कर सकते हैं। Now the question rises कि how we come up with this set of the numbers? हमने इस नंबर तक कहां से पहुंचे? आखिर हमने क्या किया जो हमें पता चला कि क्लास A का जो एक सेट होगा, that the one set of class A is going to be of 1,67,77,240 numbers of IP. How? So we come up with the term of subnet mask. हमने यहाँ पे एक टर्म को डिफाइन किया जिसको हम लोग कहते हैं सबनेट मास्क। क्लास ए 255.0.0.0, क्लास बी 255.255.0.0, क्लास सी 255.255.255.0। इट कॉल्ड एज डिफॉल्ट सबनेट। इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट सबनेट। Now the question rises, sir, what is subnet mask? अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सबनेट मास्क क्या है? So let me write it down. Means this is what amount of the host ID and a network ID in an IP means the how many blocks and octet will be occupied by a network ID or host ID in a class of IP or in a single. It also breaks, so break will be discussed in the later. मतलब ये कहता है कि अगर एक क्लास का IP है और एक IPv4 में 4 ब्लॉक्स होते हैं तो उस चारों ब्लॉक्स में से कितने ब्लॉक मेरे नेटवर्क आईडी, नेटवर्क होस्ट कर रहे हैं, नेटवर्क कंसिस्ट कर रहे हैं और कितने आपके होस्ट कंसिस्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का कि एक जो नेटवर्क ब्लॉक है वो किस क्लास का नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं वो ये बता, और एक क्लास के आईपी में कितने नेटवर्क ब्लॉक है। तो लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। हम इसको और सिंपल बनाते हैं।
So the network ID represented by M. This is ये सेट ऑफ आईपी ना क्लास को रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट करता है कि एक आईपी में आपके कितने यूजर इन आईपी इन यूजर इन मतलब एक आईपी में कितने यूजर्स हम ऐड कर सकते हैं. एंड द ऑक्टेट contain 255 is represented as neighborhood or octet. This है. ठीक है. ये now I am having 1, 2, 3 and 4 blocks of IP4 separated by a dot. हमारे पास 4 blocks हैं और ये आपके dot से separate हो. Now over here how many blocks is consist by a network and how many blocks are consist by a host network is represented by a subnet. सबनेट कितने आपके जो आईपी हैं, कितने जो आपके आईपी के अंदर जो ब्लॉक आ रहे हैं वो कितने ब्लॉक्स आपके होस्ट कंसिस्ट करते हैं और कितने नेटवर्क कंसिस्ट करते हैं, ये बताता है आपको सबनेट मास्क. इफ आई गो इन द मोर सिंप्लीफाइड वे, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, सो हियर वी आर हैविंग द क्लास ए कॉल्ड एज 0 to 127 means 255.0.0.0 means one network host, 2 host ID. 3 host ID means complete set of network, block of network, sorry, complete set of IP कर दीजिए, not the network, sorry for that. Oof. Block of IP and network consider is 126. If I talk about class B, अगर हम class B का start करें तो 128 to 191. 255.255.0.0 means 2 network host, 2 host sections. Here it is. $16,500, sorry, 384. If I talk about class C, अगर हम class C के बारे में बात करें तो 192, 223, 255.255.255.0 means 3 network block, 1 host block, 20,97,150 numbers of sets of the IP यहाँ पे form हो रहे हैं. Now the thing how कैसे form हो रहा है? So let's have the representation here. यहाँ पे हम representation करते हैं. If I pick the one set of IP, अगर हम एक class एक IP एक pick करते हैं तो 1.0.0.0. So over here, every time over here, if you want to identify कि the IP belong to which class, अगर आपको identify करना है कि ये जो IP है ये कौन से class का IP है. So have a look from left hand side first block. Left hand side first block will always represent the name, the class of IP. लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट ब्लॉक होगा किसी भी आईपी का वो आपको क्लास ऑफ आईपी रिकॉग्नाइज करा देगा, सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक. एंड द एडिंग ऑफ द होस्ट इन एन आईपी विल ऑलवेज अकर फ्रॉम राइट हैंड साइड फर्स्ट ब्लॉक. अगर एडिंग ऑफ द यूजर करना है, अगर यूजर को ऐड करना है तो यहाँ पे हमेशा राइट हैंड साइड
फर्स्ट ब्लॉक से आपका यूजर को ऐड किया जाएगा. मतलब if I try to add the user in this 1.0.0.0, so 1.0.0.1 is going to be over here. 1.0.0.2, 1.0.0.3. At which position I can convert the 0 to 1 when 1.0.0.255. When I will reach the complete full of block, when we change the room, when our room goes full, हम अपना रूम को कब चेंज करते हैं? जब मेरा रूम completely occupied हो, completely full हो. So well, in that case 0 to 255 is the limit. So over here 1.0.1.0, 1.0.1.1. again when I'll be changing that 0 to 1, हम कब वो 0 को 1 में convert करेंगे? When my both the neighbors will be full. जब मेरे ये दोनों terms full हो जाएंगे तब हम इस चीज को convert करेंगे. तो 1.1.0.0, 1.1.0.1, 1.1.0. over here. Now when I can convert this 1 to 2, अब ये जो 1 है मेरा यहाँ पे जो चल रहा है उसको हम 2 पे कब convert करेंगे? जब मेरा 1.255.255.255 हो. So if you go in the complete detailed way, अगर आप इसको पूरे detailed way में जाएंगे तो you are going to find it comes up with the 1,67,77,214 numbers of users you can add, and this is called as a complete set of IP. इसको बोलते हैं complete set of IP, and in over this term all the calculation will occur. और इसी term के ऊपर सारे calculation occur होगा. After that what is going to be 2.0.0.0 2.255.255.255. again 3.0.0.02, 3.255.255.255. these are the things. इस तरीके से ये सारे प्रोसेस चलेंगे. okay, now there is a one more thing that need to be mentioned over here. एक और चीज है जो यहाँ पे मेंशन करना है. क्लास A you might find 1 to 126. क्लास A कभी कभी आपको 1 से 126 के रेंज का भी मिलेगा. Why? 0 and 127 are the reserved IP for loopback, testing, development. 0.0.0.0 से लेके 0.255.255.255 तक, 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255. These are things. यहाँ तक ये फिक्स किया गया है. Till over here they are reserved. Look back, you all know, coming back to the position, the look back is widely used for testing your own set of network and devices. Look back जो है वो ज्यादातर अपने खुद के नेटवर्क के टेस्ट को, जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. And the development is for developing the set of application, testing those all the devices and the applications as well. सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए. So this 127 is used for all the three purpose. Look back, testing, development. ये तीनों चीजों के लिए 127 के रेंज को ज्यादा यूज किया जाता है. And 0.0.0 is completely reserved for INA. ये जो 0 से 0.255 वाला जो IP है तो completely INA reserve करके रखी हुई है for its own set of processing, for its own set of work. अपने set of processing के लिए, अपने set of work के लिए. So this never get allocated to anyone. Sometimes for the extra payment for regarding work under the INA, it get allocated. जब हम किसी INA के अंदर में काम कर रहे होते हैं तब हमें ये IP allocate होता है, but in the most of the cases they not allocate this set. There is a one more thing, private IP ranges. Private IP range है. This is completely free IP. You can use it if you are setting your own set of network. अगर आप अपना set of network configure कर रहे हैं तो आप इस IP को use कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम. कहीं किसी को कोई पेमेंट करने की जरूरत है. No need to pay anywhere else. No need to ask any set of the queries. You can frequently use it. Class A 10.0.0.02, 10.255.255.255. Class B 172.16.0.02, 172.31.255.255.
class C 192.168.0.0 to 192.168.255.2. These are things. So this is your IP ranges. ये क्या है आपका private IP ranges है, so you can use it freely without any cap. आप इसको freely use कर सकते हैं बिना किसी problem. Now, one more set guys. Over here. So let me represent this in the 4 blocks. हम इसको 4 blocks में लिख दे रहे हैं. 122.0.0, 223.255.255.255. 128.0.0.0, 191, 25, 0.0.0, 127.55. This is it. Okay. Now, this is considered as a range. इसको क्या बोलते हैं? Range. So till over here is understood by everyone. यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर. आया या नहीं आया? सर वो बीच के 255.255 समझ में नहीं आया सर. लास्ट का अजी बताइए. सर जैसे यहाँ पर लिखा है सर 1.0.255, तो सर वो जो बीच के 255 लिख रहा है वो समझा नहीं सर. फर्स्ट का क्लास है और लास्ट का नंबर ऑफ यूजर है, तो बीच में क्या है सर? उसका कुछ समझा नहीं फंक्शन सर. मतलब हम भी नहीं समझ पा रहे क्या क्या पूछना क्या चाह रहे हैं सर. वो जो बीच के 255 और 255 उसका फंक्शन क्या है सर? कौन से ये? हाँ ये वाले, ये सेक्शन. हाँ हाँ बीच के. ये 255 आपके नंबर ऑफ यूजर बता रहे हैं ना, तो ये तो 255 तो लिमिट हुआ. हाँ सर वो तो समझ गया. उसके बीच के हाँ ये जो तो सेकंड और हाँ सर ये उसका क्या तो फंक्शन? ब्लॉक्स है ना, होस्ट ब्लॉक्स है. जब मेरे ये फुल हो गए तो फिर हम इस पे आ गए. फिर यहाँ से 1.0 1.1 1.0 1.2, फिर ये फुल हुआ तो फिर इसके ऊपर शिफ्ट हुए. ओके सर. तभी ना अगर बात करें, अगर हम इन दोनों, ये दोनों भी तो होस्ट ब्लॉक है. यहाँ पे देखिए 3 होस्ट ब्लॉक है आपके क्लास ए में, तो इन तीनों में हम यूजर को ऐड कर सकते हैं. लेकिन यूजर को कैसे कैसे ऐड करेंगे वो चीज यहाँ पे बताया. ऐसा थोड़ी है कि यूजर को लिया तो सबसे पहले यहाँ से ब्लॉक किया, यहाँ पे फर्स्ट वन पे रख लिया. सर वही कंफ्यूजन था. इसीलिए मैंने मेंशन किया, दैट इज व्हाई आई मेंशन कि इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि व्हिच क्लास ऑफ आईपी यू आर यूजिंग, हैव अ लुक ऑफ फर्स्ट ब्लॉक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस क्लास के आईपी को आप यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट ब्लॉक को देखिए, सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक. यू विल गेट द थिंग्स. पहला ब्लॉक आपको क्लास ऑफ आईपी रिकॉग्नाइज करा देगा. इफ यू वांट टू ऐड अ यूजर देन यू कैन गो टू द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ब्लॉक. अगर आपको किसी भी यूजर को ऐड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट होगा. नाउ यू आर हैविंग द 3, यू आर हैविंग द 4 ब्लॉक, सो यू कैन डू इट. सर लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे या फिर राइट साइड से ऐड करेंगे यूजर को? यूजर को राइट साइड से ऐड करेंगे. अभी लेफ्ट साइड बोल दिया क्या मैंने? हाँ सर, लाइक राइट साइड से ऐड करेंगे. राइट साइड में अगर जो सर जैसे अपने को क्लास ऐड करना है तो लिमिट देखना पड़ेगा पहले. तो देन हम इसमें इसके राइट साइड से सेकंड साइड आएंगे, मतलब सेकंड राइट साइड से जो, मतलब अगर आप उसको राइट साइड से बोलो तो अगर आप उसको लास्ट लेके चल रहे हो तो फिर सेकंड लास्ट पे आएंगे. सेकंड लास्ट, जब सेकंड लास्ट फिल हो जाएगा तो थर्ड लास्ट पे आएंगे. तो इस फिर जब थर्ड लास्ट फुल होगा तो ही मेरा पूरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा. मतलब कहने का सेंस क्या है कि जैसे ही मेरा पूरा होस्ट ब्लॉक फुल हुआ मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा. As soon as my host blocks got full, I will change the network. ओके सर. सर Yes. सर नेटवर्क और होस्ट में सर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है सर? नेटवर्क आपको बता रहे हैं कि आप किस क्लास के आईपी में अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं. होस्ट आपको यूजर बता रहा है. होस्ट का मतलब है यूजर.
सर मतलब लिमिट को देख के हम क्लास देख सकते हैं सर मतलब कौन सी कितने यूजर्स कनेक्टेड है वो शो करेगा। हाँ, कितने यूजर्स कनेक्टेड है वो शो कर रहा है। होस्ट का मतलब यहाँ पे यूजर है, कितने यूजर्स हैं, क्या है, कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजों को ये बताता है। और जो नेटवर्क बता रहे हैं वो मतलब क्लास ऑफ क्लास शो फाइव करेगा। हाँ जी, और जो नेटवर्क है वो हमें क्लास शो करेगा। क्लास शो करेगा। ओके। एनी मोर क्वेरीज? आगे बढ़े। यस सर। चलिए फिर नाउ भैया, so we are just focusing on the last statement says it also help us to break the IP into the several parts that can be used in the internet. अब यहाँ पे जो लास्ट स्टेटमेंट है सबनेट मास्क वो क्या कहता है कि ये हमको हेल्प करता है कि हम आईपी को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं सेवरल पार्ट्स में, जिसको हम इंट्रानेट में यूज कर सकते हैं, जिसको हम इंट्रानेट में यूज कर सकते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग लेट मी गो विद वन डायग्राम। इसको एक करने के लिए हम एक डायग्राम के ऊपर जाते हैं। So you all are familiar with this set of the network, this set of diagram. सारे लोग आप इस डायग्राम से familiar होंगे ही। Just a second guys. Just a second guys. Let me update the timing once of my previous session. Okay. Over here. Now the thing is. Now the thing is over here. So this is your just a second. Yeah. This is your employee. This is your employee. This is your employee. This is your employee. This is your router. ये आपका router है. And this is your outside. ये आपका outside है. तो ये outside port. Okay. ये आपका outside port. So suppose this is the organization of NC.
So HCL is having one IP called as 190.25.16. HCL ने ये IP को परचेस किया. HCL purchased this IP, over which now the INA, what INA will do? INA will provide the lease connection of the internet direct to the HCL. HCL ने INA से ये IP purchase किया, सिर्फ एक IP purchase किया. INA has purchased, HCL has purchased only one IP from the HCL. Now INA is responsible to provide him the lease connection of internet over here on the direct basis. ठीक है, यहाँ पे INA HCL को direct basis पे lease connection के ऊपर IP देगा. Now अब यहाँ पे क्या होता है? Now what happens over here? The things happen over here कि why HCL spent such a huge amount to purchase this IP. HCL ने इतना पैसा खर्च क्यों किया ये IP purchase करने के लिए? He can directly go to Airtel, he can directly go to BSNL, he can directly go to the any service provider. वो किसी भी service provider के पास जाके internet ले सकता था and they can happily customize the pack according to the HCL. वो HCL के लिए happily उनके लिए dedicated एक customized pack find out कर देते और वहाँ पे वो सारी चीजों को कॉन्फ़िगर करके यूज करते. करेक्ट. बट HCL didn't. HCL वहाँ पे नहीं किया. Why? The things is कि we all are using the wire network. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग wire network के ऊपर ये सारी चीजों को यूज कर रहे हैं. So when we are using all the things on the wire medium, when we are using all the things on the wire term, so what it says कि the things can be done. So the things are being stored. The things are done with the help of storing. जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें स्टोरिंग. मतलब कहने का सेंस क्या है? आई मेड द स्टेटमेंट. तो सारी चीजें क्या होती हैं कि जो भी चीज आप सर्च करते हैं, वट एवर यू डू द थिंग्स, वट एवर यू सर्च, दे ऑल आर गेटिंग स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम लोकेशन. वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे स्टोर हो रही है. whether you turn on the data, whether you turn off the data, whether you are opening your WhatsApp, you are making a call, you are surfing, you are opening, you are doing whatever the task on the internet. आप जो भी टास्क कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर वो उनके डेडिकेटेड होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर जाके स्टोर हो रहा है. That is the thing. If you don't believe me, you can make a call and you can have the details on your own. आप कॉल करके उनसे खुद बात करके आप अपना डिटेल ले सकते हैं कि आपने कब क्या किया. Even they also know कि how many time you turned on your hotspot and how many times you turned off your hotspot. Did you change your phone or not? उनको ये भी पता होता है कि आप कितने बार हॉटस्पॉट ऑन किए हैं और उस हॉटस्पॉट पे क्या चला है और आपने अपना फोन तो कहीं चेंज नहीं किया. They know the every single thing of that. So the giant companies like HCL never want whatever the things are being running inside the company to get stored at some other location. जो giant company है HCL का वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी डेटा जो है, कोई भी थिंग जो है वो कहीं और किसी और लोकेशन पे वो ज्वाइन हो, किसी और लोकेशन पे वो स्टोर हो. So for that thing, by preserving that all the things, the HCL purchased its IP. इसीलिए HCL ने ये IP को परचेस किया. Understood now? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now, Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है? Now the thing is कि HCL is having only one IP. That is the public IP. Now, we all know one IP means one operating system या फिर one system. अब यहाँ पे क्या है कि एक IP मतलब एक सिस्टम, एक ही चीज को हम यूज कर सकते हैं. बट इनसाइड द HCL आई एम हैविंग द नंबर्स ऑफ सिस्टम. HCL के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको यूज करना मैंडेटरी है वेयर दे वांट टू यूज इट. करेक्ट. सो हाउ आई कैन डू? तो समवन विल से कि सर यू जस्ट सेड यू कैन यूज द प्राइवेट IP. कोई यहाँ पे बोलेंगे कि सर इतना क्यों दिमाग खराब कर रहा है, सीधा प्राइवेट IP को पिक कीजिए और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके यूज कीजिए. करेक्ट गाइस? That is the thing. But this private IP is known by not only me and you, that is known by everyone. ये जो private IP है वो सिर्फ मेरे और आपके बीच में नहीं है, वो publicly है, वो सबको पता है कि आप ये यूज कर सकते हैं. And this public IP of the HCL is over here, so it is known by anyone. ये जो public IP है HCL का वो तो किसी को भी पता चलेगा. क्यों? क्योंकि HCL का जो भी चीज चलेगा वो इसी IP के ऊपर चलेगा over the public. If you are fetching, if he is hosting the website, same IP, उसी IP के ऊपर ये अपना वेबसाइट को होस्ट करेगा.
if he is configuring the server for the public use, same IP. अगर वो कॉन्फ़िगर कर रहा है पब्लिक को इस सर्वर के ऊपर, इसी आईपी के ऊपर चलेगा, तो that IP is known, वो पता चल जाता है, that is not a hidden. But the thing is कि if someone knows the HCL IP, if someone knows the private IP, anyone can easily connect to the network. कोई भी उसके प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर सकता है. क्यों? क्योंकि दोनों IP उसको पता है. To make it secure, to make it best, we break the IP into the several parts. इन सारी चीजों को करने के लिए हम IP को ब्रेक करते हैं several things में. So breaking includes subnetting. Breaking क्या include करता है? Subnetting. So we are only going to look at 80% of the things. The 20% includes the rule book that is will be taught on the higher classes. जो आपके higher classes like CCNA parts में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको rule books और वो सारे term को बताया जाएगा. But over here we are just focused over this thing only. यहाँ पे हम लोग सिर्फ 80% के ऊपर फोकस्ड है. तो सबनेटिंग इंक्लूड्स. एंड व्हाट इज द सबनेटिंग सेंस? सबनेटिंग क्या है? ओवर हियर लेट्स हैव अ लुक. यहाँ पे एक चीज को देखें. परचेज आईपी. मैंने आईपी परचेज किया क्लास सी पे. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट आई कैन कनेक्ट? 254. यूजेबल आईपी in my organization is only 200. जो यूजेबल आईपी है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ 200. वेस्ट आईपी 54. आईपी जो बर्बाद हो रहा है कौन सा हो रहा है? 54. एंड if I know I can only use the 200 but I need to pay the cost of 54 IP extra. हमें पता है कि हमारा सिर्फ 200 ही यूज होगा, लेकिन जब हमें परचेस करना होगा तो हमें इस पूरे सेट का कॉस्ट देना पड़ेगा. I can't give the cost of only 200, not at all. I have to give the cost of only like complete set. हमको यहाँ पे पूरे सेट का IP देना पड़ेगा. Correct? Now, if I say कि over the single organization, if your IP is getting wastage of 54, now take the ratio of 20. अगर हम यहाँ पे 20 का रेशियो लेते हैं, and if I open the Calc, how many networks in the class C we can form? 20 lakh 97,152 into 20. 20 का रेशियो 10,000 lakh crores. 4 crore 19 lakhs 43,000 40 numbers of IP जो हमारा वेस्ट हो रहा है सिर्फ क्लास C में से. This huge amount of the numbers are getting wastage over the class C IP point. You can have the calculation over the class B or the class A. इसी तरीके से आप क्लास A और क्लास B का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. So I can provide the unique IP to the unique user over the 4 crores. हाँ, 4 करोड़ लोगों को हम यूनिकली कनेक्ट कर सकते हैं अब भी, बट हम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वेस्टेज में to recover the IP wastage, to recover the things, we come up with the subnetting point. यहाँ पे उस IP को रिकवर स्टेज में भी करने के लिए कि IP मेरा वेस्ट ना हो, हम यहाँ पे सबनेटिंग के टर्म पे हैं. So now with the help of subnetting, we can only purchase the IP how much we needed. अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग सिर्फ उतनी ही IP को परचेस करते हैं जितना हमें जरूरत है. मान लीजिए कि हमें 2 की जरूरत है. I will pay for only 2. हम यहाँ पे सिर्फ 2 के लिए पे करेंगे, बाकी सेम क्लास में ऊपर कोई और परचेस करे, डजंट मैटर. दैट इज हाउ द appear. एंड इवन दो आफ्टर ऑल दिस स्टेप्स, इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं? आईपी को ब्रेक कर सकते हैं. तो ब्रेकेज ऑफ द आईपी इन्वॉल्व्ड, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर इन द फ्यू सेट्स. यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए हुए हैं आईपी को ब्रेक करने. द आईपी इज 190.25.16.1. So first we need to convert into the binary segment. पहले हमको इसको binary segment में convert करना पड़ेगा. 2 to the power 7 plus 2 to the power 6 plus is a thing. If we
calculate, so 122 to the power 7 means 128 plus 64 plus 22, 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. When you add all the things, what is the sum? जब आप इन सारी चीजों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? I hope my calc is visible to everyone. Correct. So the thing is 128 plus 64 plus 28, 2 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. 255. क्या है sum? 255. That is the reason we reach to the limit 0 to 255. यही रीजन है कि हम लोग हमेशा 0 से 255 के ऊपर आते हैं हर एक ब्लॉक के ऊपर. We added 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. This is how the representation है. इस तरीके से आपका representation form है. सर Yes. सर इंटरव्यू में ये सब भी पूछेंगे, ये बैकग्राउंड 255 कैसे है ये वगैरह? हाँ, तो 255 तो पूछ सकते हैं कि why we are limit to the 255. तो simple statement sir, when we convert it into the binary segment, so we come up with the sum of 255. जब हम binary segment में convert कर रहे होते हैं और हमारा जब सारा bit on होता है तो वो 255 को represent करता है. That is the reason. Okay. तो पूछ सकते हैं वो over the interview you cannot say what they need to ask or what they are going to ask. They can ask any kind of the question. वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. And over that panel, if you are sitting on the chair, you have to provide the answer. अगर आप उस पैनल पे बैठे हुए हैं, आप उस चेयर पे बैठे हैं, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा without any kind of the problem, बिना हेजिटेशन का, बिना किसी प्रॉब्लम. Understood, guys? Yes, sir. Now, over here, same thing. So as we made the calculation, so we come up with the 255. जैसे हमने calculation को made किया, सारी चीजों को ऐड किया, तो अब हमारे sum 255 के ऊपर. And those portion that we have added, they will be represented with the 1, and those portion will not add, will represented over here as the 0. उस portion को हम 1 से represent करेंगे जिसको हमने add किया है, और जो portions को हमने add नहीं किया है उसको हम 0 से represent करेंगे. Now I need to convert the 190 into binary. अब हमें 190 को binary में convert करते हैं. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. In this all the numbers, how many numbers we are going to add to come up with the sum 190? इन numbers में से कितने numbers को हम add करेंगे कि मेरा sum 190 हो? Tell me guys, quick. क्या बोल रहे हैं कि इतना मैथ्स अच्छा नहीं है सर? Sir, 128, 32. 128, 32. Just a second. 128, 32. 32. 16, 8, 4. 8, 4, 4, 2. 2. 190, very nice. So what we have added? 128. We add 64. No. 32 yes, 16 yes, 8 yes, 4 yes, 2 yes. 1 no. That is how the things go to it. 1 0 1 2 3 4 0. This is how we represent the 190.
Same as with your 25. So 25 calculation is very easy. 16 8, come up with like 16 8 24 and 1 25. So 0 plus 0 plus 0, 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1, called as 25. 000 double 1 001. Same as 16. So we are having a 16 over here. So no need to worry. Same as with 1. So we are also having 1. So no need to worry of this thing as well. 1 2 3 4 5 6 7 and 1 8. These are things. This is how we say. इस तरीके से अब हम बोलते हैं. Okay. Now, how it get represented like this. 1 0 1 2 3 4 5 6. First part is 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 4. Yes. This is how we represent the normal IP into the binary sum. इस तरीके से हम normal IP को binary term में हम convert करते हैं. Now, what says over here? 0 represents off bit, 1 represent on bit. 0 आपके off bit को represent करता है, 1 आपके on bits को represent करता है. On means that bit come in the concern, that bit got added itself. That is why we come up with this IP. 1 इसलिए कहा जा रहा है कि हमने उस बिट्स को ऐड किया, उस बाइट्स को हमने ऐड किया, तभी हम इस सेट ऑफ IP पे आ रहे हैं. Now, according to the rule book, this says कि in a class of IP, how many bits are on in a particular octet. Class of IP के किस octet में कितने bits on है, and at the time of conversion, how many bits we can on it on our side. और हम अपने साइड से कितने बिट्स को ऑन कर सकते हैं. So that is the really very confusing part. वो काफी confusing part होता है because it is having the over the one statement it is having the multiple segments. एक स्टेटमेंट के ऊपर उसके मल्टीपल सेगमेंट्स हैं कि आप कैसे एक आईपी को डिराइव करते हैं. हाउ यू आर डिराइविंग द वन आईपी इफ यू आर कन्वर्टिंग इनटू द इंट्रानेट. अगर आप इंट्रानेट में अपने एक पब्लिक आईपी को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको कैसे आप डिराइव करेंगे कि वो इंट्रानेट के सेक्शंस में यूज हो. So that require the 2 to 3 days complete. वो 2 से 3 दिन का complete एक topic है. So the most important task over here is your conversion. जो सबसे important task है आपका वो है conversion. Understood guys? So till over here is understood by everyone. यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes sir. Any confusion over here? यहाँ पे confusion है? बस एक क्वेश्चन पूछना था सर, आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट क्यों करते हैं सर? बेसिकली मेन रीजन क्या है? आईपी को जब तक हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसके नए सेगमेंट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये चीजें बाइनरी में है, लेकिन ओवर द इंटरनेट ओवर द टर्म वो कैसे काम करता है ये तो हमें पता है ना कि 192.25.1.6.1 है. हमारे सिस्टम को कैसे पता चलता है कि वो 190 ही है ड्यू टू दिस बाइनरी सेगमेंट्स, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ 0 और 1 के टर्म को समझता है. जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है, इवन योर वॉइस इज आल्सो ट्रांसमिटिंग, दिस ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. जो आपका वॉइस भी ट्रांसमिट करता है वो भी 0 और 1 के टर्म पे ट्रांसमिट करता है. इफ यू आर मेकिंग अ कॉल, आप किसी के साथ नॉर्मल कॉल पे भी बात कर रहे हैं, इन दैट टर्म एज वेल योर वॉइस इज ट्रांसमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. अगर आप किसी के साथ वॉइस कॉल भी बात कर रहे हैं तो भी वहां पे आपका जो वॉइस है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर रहा है. That is it. Understood? Okay. So there was the one called Lucy. Have you seen the Lucy movie? Anyone? Lucy? Right? Yes. So there was a clip कि she can use the 100% of her brain, कि वो 100% अपने brain का use कर पाती है. So you can see all the signals of the telephone at some point.
एक पॉइंट पे वो सारे टेलीफोन्स के, सारे लैपटॉप्स के सिग्नल्स को भी देख सकती है. करेक्ट. If you haven't gone through that, you can have the thing over the YouTube. You will find that. YouTube पे आपको मिल जाएगा. So over there, in the signals that represents the 0, 1 is transmitting and receiving. वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे सारे जो terms हो रहे हैं हर एक सेल फोन्स के ऊपर, सारे ट्रांसमिशंस आपकी 0, 1 के टर्म पे हो रहे हैं. You can go with the to understand this thing in a more efficient way. You can have a movie that you can watch, The Matrix. Matrix एक मूवी है जो आप देख सकते हैं, जो that is completely focused on 0 and 1. वो पूरा उसका जो मूवी है वो पूरे 0 and 1 के टर्म्स पे ही चलता है. Understood, guys? Yes, sir. And the things is like थोड़ा सा एक ऑफ द टॉपिक है. ऑफ द टॉपिक ये है आपका, have you heard the tone of Matrix movie? उसका जो बैकग्राउंड थीम है आपने सुना है? No, sir. Then have a thing, guys. मतलब एक बार आप उसको जरूर सुना ध्यान से. That all the representations of the 0 and 1 is mentioned on that particular theme song of Matrix, and that all the things got derived from your Gita called as Bhagavad. So all the things were represented over here on that statement only. सारी चीजें उसी स्टेटमेंट में लिखी हैं आपके 0 और 1 के टर्म पे, और वो सारी चीजें कहाँ से डिराइव हुई हैं? आपके भगवत गीता से. So it contains all the shloks in that. Okay. उसका जो पूरा जो ट्यून है जो मैट्रिक्स मूवी का है वो सारे उसी ट्यून के ऊपर बेस्ड है, सारे टर्म्स के ऊपर. एंड इट सेज कि फ्रॉम वेयर द 0 and 1 केम एंड हाउ दे गॉट जनरेटेड एंड हाउ द थिंग गॉट हैपेंड. उस टर्म में बताया है कि आपके 0 and 1 कहाँ से जनरेट हुए और कहाँ से सारी चीजें हो रही है. सो इफ यू आर ईगर टू गो इन दैट स्टेटमेंट जस्ट फॉर द नॉलेज बेसिस, यू कैन हैव अ लुक, बट स्टिक विद द इंटरव्यू पैनल्स. इन सारी चीजों के ऊपर टर्म रही है. That is the another sections, for another sections है just for your higher knowledge, not for the interview purpose. Interview purpose के लिए नहीं, वो सिर्फ एक higher knowledge के लिए मैंने बताया. But for the interview sections, you have to stick with this point. Interview sections के लिए आपको इन सारे points के ऊपर stick रहना पड़ेगा कि ये कैसे convert हुआ और यहाँ पे हम binary के ऊपर क्यों. Clear, guys? Very well. So now, as moving ahead to the another point, like I have to cover the another term. So we have to go in a hypothetical situation. हमें आगे का point cover up करना है, तो उसके लिए हमें एक hypothetical situation में जाना पड़ेगा, where we have to assume that we have converted, we know all the rule books and we have done. कि हमें ये जाना पड़ेगा कि हमें इस rule books को हम जानते हैं और हम एक नए IP को derive कर चुके हैं, but in the reality we haven't. Reality में actual term पे हमने नहीं किया, हमने सिर्फ conversion देखा. We have only seen the conversion over here. So we are going in the hypothetical situation that we have done it and we derived one IP called as 190.26.1.1. इस IP को हमने derive किया. We derived this IP. So what this IP will called as? What this IP is going to be called? This IP CIDR. ये IP आपका कहलाएगा CIDR, stands for classless routing. ये कहलाएगा classless interdomain routing. ये क्लास कहलाएगा आपको CIDR. That is only going to used inside the domain routing. ये सिर्फ आपके internal purpose के term पे use होगा. That is only going to use inside for the internal purpose only, not for the public as well. ये कभी भी public bills पे काम नहीं करेगा. Now, classless means we have break the IP and we are coming to the term where it loses its all the classes. यहाँ पे क्या है कि हमने पहले IP purchase किया था आईना से, that was the 192.25.16.1. So it contains some kind of the class. वो क्या कर रहा था, वो कुछ class को contain. We will over here to complete this thing. हम लोग यहाँ पे रहेंगे अभी complete करने के लिए. session अभी खत्म नहीं हुआ. The session is not finished yet. So over here we are like when we purchase this IP 190.25.16.1, हमने इस IP को purchase किया.
from the INA, so it belongs to class full IP. ये क्या कर रहा था, ये class full IP पे belong कर रहा था, but as soon as we have done the mathematical calculation, it got converted into the classless. जैसे ही हमने इसके ऊपर mathematical calculation किया, इसको break किया, ये एक classless IP के अंदर form किया, that is called as CIDR, classless interdomain routing. Understood guys? इसको हमने किया classless interdomain routing के टर्म पे. This is the thing. Now, ये सारी चीजें हुई, तो इस टर्म पे है. Now, how the CIDR get defines himself? CIDR अपने आप को यहाँ पे कैसे define करता है? So CIDR says कि 190.26.1.1, 190.26.1.2, 190.26.1.3. How long it is going to work? It is going to work till 190.26.1.254, 190.26.1.255. Okay. Now what is over here? This IP and this IP. Both the IPs will go into reserved. This IP will be reserved by knowing the network section, or we can say that the network IP inside the CIDR. CIDR के अंदर इसको network IP और ID के टर्म पे कहा जाता है. And if I talk about this one, for broadcasting ID or IP. Every IP, every set, in every set, हर एक सेट का स्टार्टिंग पोर्शन और एंड पोर्शन हमेशा रिजर्व होगा. Every set, the starting IP and the end of that IP will be reserved for network ID and the broadcasting IP. In the broadcasting IP, it says it is responsible for managing the table of the usable IP. Broadcasting IP किस चीज के लिए responsible है? इस टेबल को मेंटेन करने के लिए कि how many IPs are being reserved, how many IPs are being used, and how many IPs are free. मतलब यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग आईपी ये क्या बता रहा है कि इन यूजेबल आईपी में से कितने आईपी मेरे ऑक्यूपाइड हैं, कितने आईपी मेरे फ्री हैं, और कितने और आईपी को हम एलोकेट कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई न्यूज सेगमेंट आया तो. दैट इज व्हाट इट सेज ओवर हियर. ये यहाँ पे ये बता रहा है, दैट इज द थिंग. एंड दे बोथ आर कंबाइंड फॉर रिजर्व्ड फॉर सीआईडीआर. ये दोनों सारी चीजें कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है? सीआईडीआर के अंदर. रिजर्व्ड फॉर सीआईडीआर पर्पस. इस सारी चीजें आपके सीआईडीआर पर्पस के ऊपर यूज हो रही है. नाउ द आईपी एलोकेशन विल बी डन ओवर हियर. अब यहाँ पे आईपी एलोकेशन होगा. द थिंग सेज 190.26.1.2. यहाँ पे जो आईपी एलोकेशन होगा वो कुछ इस टर्म पे आईपी एलोकेट होगा. .3 .4 This is the IP got allocated to everyone. इस तरीके से IP अब सबको allocate होगा. Now over here the IP got allocated. Over here the things will be same. Suppose 1.2 is demanding for something over the internet. 1.2 कुछ इस तरीके से डिमांड कर रहा है कि उसे कुछ इंटरनेट पे चाहिए. So it will goes to the switch. ये सबसे पहले switch के पास जाएगा where the CIDR will get. Where after that it will go to the CIDR. ये switch के साथ साथ CIDR के पास भी calculate करेगा to get himself authenticated कि this is the real IP that is being used according to the table by this user. मतलब उसके टेबल के अकॉर्डिंग क्या यही यूजर इस आईपी को एलोकेट किया गया था और वही यूज कर रहा है, उसी ने रेज किया है. इफ यस देन इट विल मूव अहेड. तब वो आगे बढ़ेगा. देन ही इज गोइंग टू कांटेक्ट विद द नैट एंड पैट. तब ये वहां पे जाके नैट और पैट से कांटेक्ट करेगा वेयर ही विल गेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन. जहां पे उसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मिलेगा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मास्किंग द सीआईडीआर आईपी विद द रियल वन. अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा क्लासलेस आईपी है उसको रियल आईपी के साथ मास्क किया जाएगा एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द रिक्वेस्ट विल बी नोन एज HCL रेज द रिक्वेस्ट. अब ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या जाना जाएगा कि HCL ने आपके रिक्वेस्ट को रेज किया है.
तो fulfillment will be done over the HCL thing. जो fulfillment होगा वो HCL के term पे होगा. In the same way, when we receive the electricity bill, so we receive the electricity bill on the basis of house number, house owners, not on the basis of devices. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो हाउस नंबर पे आता है, हाउस के ओनर के नेम पे आता है, ना कि डिवाइस हमने ये चीज यूज किया है उसके टर्म पे आता है. दिस इज व्हाट योर ऑल आईपी सिग्नल्स. ये आपका पूरा आईपी कहता है. अंडरस्टूड गाइस? समझ में आया? सर CIDR क्यों जरूरी होता है सर? आप अगर किसी आईपी को ब्रेक कर रहे हैं तो कुछ तो टर्म होगा जहां पे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि वो क्लासलेस है या फिर आपने उसको वो ब्रेक्ड आईपी है. तो सीआईडीआर वैल्यू आईपी को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरी होता है कि वो आपका क्लासफुल आईपी है या फिर वो क्लासलेस आईपी के अंदर आप. क्लासलेस आईपी दो ही हो सकती है ना सर? मतलब सर क्लासलेस आईपी तो दो ही हो सकती है ना सर, एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्टिंग, वही होंगे ना सर? क्लासलेस आईपी वो आईपी हुए जो ब्रेक होके डिराइव्ड हुआ, जैसे 192.26.1.1. अब वो कहां तक चलेगा? पहले ये बताइए कि 190 कहां तक का आईपी है, किस क्लास का आईपी है? क्लास सी. क्लास सी का है 190. क्लास बी का है. क्लास बी का सर, सॉरी क्लास बी का. क्लास सी 192 से स्टार्ट होता है. क्लास बी में हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं? होस्ट के 2 ब्लॉक्स हैं, तो ये 255.255 तक चलेगा. 190.26.255.255. वो जो एक सेट हुआ उसमें से 2 आईपी रिजर्व हुआ, जो बता रहा है कि एक मेरे सेट ऑफ आईपी में से ये डिफाइन करेगा कि कितने टर्म्स हमारे बचे हुए हैं, कितने आईपी को और हम एलोकेट कर सकते हैं, और एक बता रहा है कि आप किस नेटवर्क पे हैं, मतलब आप किस स्टैक के आईपी को यूज कर रहे हैं. बता रहा है कि आप किस स्टैक के आईपी को यूज कर रहे हैं. दैट इज अ थिंग. ओके सर. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आईपी सिर्फ आपका सीआईडीआर आईपी 2 होगा, नहीं. वो उस पर्पस के लिए रिजर्व किया गया है, रिजर्व्ड फॉर सीआईडीआर पर्पस. लेकिन सीआईडीआर का पूरा पर्पस क्या है? इन सारी चीजों को रेगुलेट करना, इसलिए पर्पस लिखा हुआ है, नॉट फॉर द सीआईडीआर टर्म. कि ये 2 आईपी सिर्फ सीआईडीआर होंगे, ये नहीं है, ये पूरे सीआईडीआर का ब्लॉक है. अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़े कि अभी और कुछ पूछना है? वेरी गुड. So now the next thing come up over here is your networking commands. अब यहाँ पे जो next thing आता है आपका वो networking commands का आता है. So here is your networking commands. So let me quickly copy that thing. इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं. Now, the networking command, first command is your ping. Ping stands for packet internet proper, which says it is only used to test the connectivity. जो ping है वो सिर्फ आपके कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि you are connected with the internet or not, you are connected with a dedicated resource or not. आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं या नहीं, आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स के साथ कनेक्ट हैं या नहीं, that is what the ping says. ये क्या कहता है? Ping. So if I run window-r cmd. So to run this command, to demonstrate this all the functions of the command, I am using the prompt called as command prompt over here, which is in the Windows itself. जो उसके Windows में खुद है, जिसका टर्म हम बोलते हैं command prompt. So over here we will type ping. यहाँ पे हम ping को यूज टाइप करेंगे और हम यूज कर रहे हैं IP 8.8.8.8. हम यहाँ पे 8.8.8.8 कर रहे हैं, जो
dns.google का IP, ठीक है, हम इसको एंटर करेंगे, पिंग, वेरी वेल। अब यहीं पे अगर हम पिंग करें, if I try to ping 190.26.1.1, so what I will get, this is the same IP that we have taken over here for an example, so I'm getting request timeout, यहाँ पे हमको क्या आ रहा है, request timeout आ रहा है। So when I'm going to receive this kind of the error, ये जो request timeout है ये हमें कब मिलेगा, when I'm not connected with that particular things, when that particular IP is not in my network, वो जो IP है जिससे हम कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपने कनेक्शन को चेक कर रहे हैं कि हम उसके साथ कनेक्टेड हैं या नहीं, तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है कि आप उससे कनेक्टेड नहीं है, हमने 4 बार ट्राई किया लेकिन आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, that is why you are getting the request timeout, that is the reason you are having the request timeout error. But with the 8.8.8 dns.google, everyone is connected, I am also connected, that is why the reason I am getting over here. If I go with the ping statistics, sent 4, received 4, lost 0%, means I have sent the 4 packet, that is the dummy packets that we check, and I sent 4, the reply back come in the 4 cell as well. जो मैंने 4 पैकेट भेजा था वही 4 पैकेट मेरे पास आया, मेरा 0% लॉस था। राउंड ट्राइप, लिविंग माय सिस्टम, रीचिंग टू द लोकेशन एंड कमिंग बैक विद द रिस्पांस, मेरे सिस्टम से निकला, रिसोर्स तक पहुंचा, लोकेशन तक पहुंचा और रिस्पांस के साथ वापस आया, दैट इज योर राउंड ट्रिप टाइम। तो मिनिमम 111 मिलीसेकंड्स, मैक्सिमम 126, एवरेज 190, ये टाइम लगा इसको आने। और TTL stands for time to leave, means 115 milliseconds was taken by the packet to circulate himself. 115 milliseconds लगा एक पैकेट को अपने आप को रेडी करने में कि आप कैसे चीजों को प्रोसेस करें। So not only with the IP, if we want to check www.google.com, so wait, ping request will not be found. Check. Oh, I just added the 1W extra. हमने सिर्फ एक W को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, तो वही you can see you can check your URL as well. आप अपने किसी भी URL को रन कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो पिंग का सिंपल सा काम है, the work of the ping is just simple to test your connectivity. पिंग का सिंपल सा काम है कि आपके कनेक्टिविटी को टेस्ट करना। Is the thing. We are having a traceset. तो traceset is tracing the route, कि आपके रूट को ट्रेस करना, ठीक है। ट्रेसेट का क्या काम है कि आपका जो भी पैकेट ट्रैवल कर रहा है उसके रूट को ट्रेस करना, फॉर टेस्ट फॉर चेकिंग द रूट्स ऑफ एवरी पैकेट्स। सो इफ आई गो विथ ओवर हियर CLS TRACERT 8.8.8.8 press enter. Tracing route to the DNS.Google, I just said you कि this IP is of belong to DNS.Google, मैंने आपको ये बताया था, ये IP आपके DNS.Google को belong कर रहा है, over a maximum of 30 hops. What is the hops over here? Hops is your networking device, networking resources which is responsible for fulfilling the request. Okay. Hops यहाँ पे क्या है, जो आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके सराउंडिंग में, तो इट कैन गो अप टू द 30 होप्स ओनली, ये सिर्फ 30 तक ही जा सकता है। वाई? टू ओवरकम विद द प्रॉब्लम ऑफ लूपिंग, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आपके लूपिंग के प्रॉब्लम को। इफ यू आर रनिंग एंड यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स बिटवीन द 1 to 30, अगर आप रन कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स और आपका पैकेट 1 से 30 के बीच में कहीं पे भी या 30 तक में भी आपका डिलीवर हो जाता है तो ठीक है, इफ नॉट देन इट मींस यू आर जस्ट not connected in that, आप उस टर्म में कनेक्टेड नहीं। फर्स्ट रो ऑफ द टाइम says at what time you have reached, the second row says it time for processing, the third says कि at what time you leave that system, ठीक है। पहला जो रो है वो बता रहा है कि आपने कब उस लोकेशन तक पहुंचे, बीच जो सेकंड रो है वो बता रहा है कितना टाइम लगा आपको प्रोसेस करने में, थर्ड रो बता रहा है कि आपने उस कब सिस्टम को छोड़ा, और रेस्ट आर शोइंग द IPs ऑफ द स्टेटमेंट, रेस्ट जो है वो आपके IP को शो कर रहा है। एंड एट द 11th होप्स आई रिसीव्ड माय टर्म DNS.Google, 11th होप पे हमको मेरा DNS.Google मिल गया। दिस इज व्हाट इट इज। अंडरस्टूड? एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द पिंग और ट्रेसेट? वेरी वेल। So after that I am having the term IP config, उसके बाद मेरे पास टर्म है IP config, stands for Internet Protocol Configuration.
इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन है आपका. ओके, सो दिस इज द कमांड आल्सो नोन एज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन troubleshooting. ये कमांड आपके कॉन्फ़िगरेशन troubleshooting IP is set. If I want to check the complete details of the if I want to check the detail कि how much IP I am having, which IP I am using, so I will go for IP config. हम कौन से IP को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, हम IP को चेक करेंगे. अगर हमको मेरे डिवाइस के पूरे अडेप्टर को चेक करना है कि हम मेरे पास क्या MAC एड्रेस है, क्या सारी चीजें हैं, what the MAC address I am having, what the IPs I am occupying, so I will go with IP config/all. हम IP config/all पे जाएंगे. If I say IP config/release कि I am connected with the internet but still I am not able to use, हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, so I will go with IP config release. हम IP config release के ऊपर जाएंगे. Okay, and if I go with renew, तो release says कि whatever the IP you have occupied, you are releasing that IP. आप जो भी IP को occupy करके रखे आप उस IP को release कर रहे हैं. Renew says you are requesting your DHCP server to renew the new IP. आप अपने DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको एक नया IP दीजिए by running this config. So I will not be running the IP config release or renew. हम यहाँ पे release और renew को run नहीं करेंगे because I will disconnect with the network. हम network के साथ disconnect हो जाएंगे. I am just going to run IP config and IP config/all. So here we go. IP config. So you have seen all the adapters over here. यहाँ पे मेरे जितने भी adapters हैं, सबने जो IP occupy करके रखा है उसके डिटेल आ गई. IP whatever the IP they have occupied, all the completed over here. Those who are disconnected, they are disconnected. If I want to know the complete detail of this adapter, अगर हमको उस पूरे adapter का डिटेल जानना है पूरे adapters का, तो I will simply run IP config/all. हम यहाँ पे simple run करेंगे IP config/all और यहाँ पे मेरे पास पूरा डिटेल आ जाएगा. I'll be getting over here the complete detail. हमको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा आपके IP config, including their name, including physical address, including everything. यहाँ पे नेम, फिजिकल एड्रेस और सारी चीजें हमको यहाँ पे. Okay, this is the thing. Now the next command says nslookup. So nslookup is only used to locate your DNS server. nslookup आपके DNS server को locate करने के लिए यूज होता है, जिसको DNS server knows कि from where your response is getting fulfilled, from where your request is getting fulfilled. DNS server को पता होता है कि आखिर वो जो भी चीजें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो चीजें कहाँ से fulfill हो रही है और किस जगह से आ रही है. That is the thing. तो simple language में कह सकते हैं nslookup is responsible for fulfilling the request or locating the things कि whatever the things you are requesting from where it is getting fulfilled. मतलब nslookup को हम कह सकते हैं कि आप जो भी चीज के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो चीजें कहाँ से फुलफिल हो रही हैं, इस चीज को ये लोकेट कर सकता है. सो भैया ये विल गो nslookup 8.8.8 unknown name 8 sorry dns.google. If I say nslookup www.google.com is the thing. So not only the Google, I can go with any website. हम किसी के टर्म पे जा सकते हैं. I want to know the YouTube. Here is a YouTube. I want to know about the Amazon. हमको Amazon के बारे में जानना है. ओ भैया, the thing is, oh wait, this is it. So this much IPs are available to respond to fulfillment of the Amazon over here. This is what it is. Yeah. This is what the nslookup is. Understood, guys? ठीक है? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नो सर. कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? सर सारी टर्म कंफ्यूजिंग है सर. कैसे? बताइए. नहीं समझ में आ रहा है सर. मतलब कौन सी चीज किस बात के लिए हम यूज कर रहे हैं. अच्छा, आपका कोई फ्रेंड है? हाँ. फ्रेंड है. आप उसको मतलब वो कभी भी अगर आपसे कुछ नोट्स मांगता होगा या फिर कुछ भी कहता होगा तो आप क्या बोलते हो कि अभी हम बिजी हैं, आप मुझे एक बार शाम में याद दिला देना. करेक्ट? हाँ बोलते हैं. या फिर कोई अगर जूनियर मिल गया तो उनको बोलते हैं कि यार एक काम करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे. करेक्ट?
yes. What does the meaning of ping then? Testing the connectivity. आप उसके साथ connect हो रहे हैं. Understood now? अब समझ में आया ping का मतलब? हाँ, लेकिन ये सारी चीजों से हम कैसे कनेक्ट होंगे सर? क्या? यहाँ पे सारी चीजों से आपको कनेक्ट नहीं होना, ये टेस्टिंग के लिए है. ये आप अगर ये सोच रही हैं कि आपको बैठ के अगर करना, नहीं, यहाँ पे बोल दिया गया कि आपको आईपी को चेक करना है कि आप मुझे चेक करके बताओ कि हम इस चीज के साथ कनेक्ट है या नहीं. तो कनेक्ट है या नहीं, इसके लिए हम पिंग कमांड का यूज करेंगे. ओके. अगर हमको ये चेक करना है कि मेरा, अगर हम कहीं, अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स में कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर मदर फादर कोई भी आपके क्लोज वन अगर कहीं ट्रैवल करते तो वो क्या करते, अपने लोकेशन को शेयर करते थे कि आप ट्रैक करते रहना कि हम कहाँ पहुंचे क्या किए. करेक्ट. करेक्ट. वही चीज अगर हमको ट्रेस करना है कि हमने जो पैकेट शेयर किया, वो किस बात को फॉलो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके लिए हम ट्रेसेट यूज करेंगे. अब हमको ये चेक करना है कि मेरा जो व्हीकल है वो सही है या नहीं, वो सही चल रहा है या नहीं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व कर रहा है, उसके लिए हम आईपी कॉन्फिग का यूज करेंगे. अब हमको ये पता करना है कि मेरा जो भी चीज हम जब कहीं पे भी जा रहे हैं या फिर कोई भी अगर मॉल है तो मॉल में सारे सप्लाईज कहाँ से आ रहे हैं, होलसेल मार्केट क्या है, उसके लिए हम एनएस लुकअप जाएंगे. अब समझ में आ गया? जी सर. अब कोई कंफ्यूजन नहीं सर. चीजों को रिलेट करना, दैट इज द थिंग. So here is your interview questions. Please have a note, guys. Be quick, please. We are running late. सर थोड़ा ऑप्शन का दिया. Just a second, guys. स्क्रॉल डाउन करिए सर. Scroll down 1 to 18 तक सबका हो गया, 1 से लेके 18 तक. Yes sir. Nineteen to 39. Yes sir. Sir. $55 done. Yes sir. It is the one last question, that is the 56. ठीक है. This is the thing that we have covered, yes guys. ये चीजें हमने यहाँ पे कवर अप की. And just uploading the sheet. हम सिर्फ sheet को upload कर रहे हैं. Just a second. Please check your portal, guys. The portal के आप अपने notes के section में जाएंगे. You will find the notes over there. If you go to your notes sections, you will find the sheet over there. Okay. You can have the check. You can have the check. And let's keep the session till over here, guys. We have discussed everything. If I go to the syllabus, अगर हम syllabus पे आए, so we have gone through the every networking devices, cable types, topology, OSI protocol, internet protocol, and networking commands. We have discussed all the things over here. So I wish you all the best for your future endeavors for your upcoming session. Thank you so much for being here, and with the patience you have be here for the more than 30 minutes.
I really appreciate it. Thank you so much. Thank you, sir. Bye bye. Take care. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you so much, guys. And please share your reviews with your respective HRs and over the portal as well. Yes. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you so much. All the best. Bye bye, guys. Bye bye. Bye bye.